नमस्कार, वेलकम टू RCI नवशिखर चैनल। आप सभी का RCI के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है रोल ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। और इस चर्चा के विषय के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। टू माई एक्सट्रीम लेफ्ट इज डॉक्टर शरद रंगा, who is an HOD at Pandit Deen Dayal Upadhyay Institute for the Physically Handicapped, and another expert is Mr. G. Pandian, who is lecturer in the same. तो ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ आज के चर्चा के विषय के लिए, जो इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। और अब इस जानकारी के लिए हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि इस रिगार्ड में कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या उनकी कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज़ हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। If you want to share your views or if you want to give any ideas, any questions, please do ask on our toll free number. आइए हम अपनी चर्चा को शुरुआत करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम सर। सर, जैसा कि आज का हमारा चर्चा का विषय है रोल ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। सर, एज वी ऑल नो कि लोकोमोशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, बी इट अ नॉर्मल individuals or the special individuals. We have the term rehabilitation. What the actually term rehabilitation means? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास। जब कभी किसी कारण से कोई आदमी चल नहीं सकता या कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है जो लोकोमोटर से कनेक्टेड है। इसमें रिहैबिलिटेशन एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लोग एड्स एंड अप्लायंसेस के जरिए हम लोग उनको वापस उनके जो काम वो कर रहा होता है उसी काम वो दोबारा कर सके, ऐसी हालत में हमको ले आते हैं। उसे हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास। पुनर्वास एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए आदमी अपने रोजमर्रा के कार्य कर सकता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, या और भी कई कार्य है जो वो कर सकता है। पर उन सब कार्य के लिए जो चीज से वो पैरालाइज हो चुका है उसको हम लोग इंजीनियरिंग के माध्यम से एड्स एंड अप्लायंसेस यानी वह उपकरण है जिन उपकरण के जरिए वह कार्य कर सकता है। तो आज का जो हमारा विषय है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा रिहैबिलिटेशन की डेफिनेशन क्या है और रिहैबिलिटेशन क्या होता है। Rehabilitation is a combined process of various experts like medical, social, economical, vocational, who are in the rehabilitation team set up to train the individual to bring back the highest possible level of his functional ability. यानी कि ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क के जरिए हम लोग पूरी टीम बैठ के डिसाइड करते हैं कि इसकी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में किस किस चीज़ों की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने अप्लायंसेस फिट कर दिया पर वह ऐसी बिल्डिंग में कार्य करता है जिस बिल्डिंग में अप्लायंसेस पहन के वो जा नहीं सकता, तो यानी एक सोशल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, आर्किटेक्चरल बैरियर्स खड़े हो जाएंगे। इन सबको मद्देनजर देखते हुए पूरी टीम डिसाइड करती है कि कौन से कार्यक्रम को हम कहाँ लागू करें। सर, जैसे आपने रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया, दैट मीन्स सर रिहैबिलिटेशन द टर्म इटसेल्फ एक्सप्लेन्स दैट वी आर मेकिंग द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इन रिगार्ड ऑफ एनी एस्पेक्ट। यस, एज पर द WHO International Classification, in its simplest form, this may be represented as a sequence: disease or disorder, impairment, disability, and handicap. Due to any region of any part of the body is unable to perform its function to the fullest extent, it is known as impairment and it leads to disability. Disability: any restriction or prevention in the performing an activity as a result of an impairment which leads to restriction in normal range of activity for a human being is called disability. This may include difficulty in walking, seeing, speaking, hearing, reading, writing, lifting load, etc. within the range of considered normal. Some of the disabilities, the type of disability,
First is the locomotor disability, that what today we are discussing. Then speech and hearing disability, visual disability, and mental retardation. Handicap. It is the disadvantage, the condition that limits or prevents the fulfillment of the role that is normal for the individual in the family and society. Initially, the handicap is temporary, and if no medical attention is given, it became permanent. Now, the locomotor disability. The locomotor disability occurs when movement in our body is affected due to disease, injury, deformity in the joint, bones, muscles, nerve injury, spinal cord lesion, then brain injury and congenital deficiency. This may be due to several diseases like poliomyelitis, the polio of the disease. It is the highest figure of the disability, locomotor disability, due to the polio only. Then stroke, paraplegia, quadriplegia, then cerebral palsy if the congenital problem. Then amputation is due to the accident and other cause. Then congenital deformities. Then this is the question, how to identify locomotor disability. There are various ways when we are doing the assessment of the patient. When we tell the patient to do the both the hand up, if he can do the clapping over the head, we can say the upper extremity is normal. If he can't in a position to walk properly, then we can say there must be some deformity at the leg, that is, he is not walking properly. Suppose there is a shortening at the leg, he may walk with some abnormal gait. If he cannot move or if he cannot turn, that means there must be something deformity with the spinal column. So there are so many problems associated with the bones. This is the reason we can say that he is orthopedically disabled, or we can say the locomotor disabled. So while doing assessment, one orthopedic surgeon or the physical medicine doctor or a rehabilitation expert or rehabilitation professionals, they can do the assessment of the locomotor disability, so that we can come to the conclusion that what type of appliances he or she needs. Suppose there is a problem, he is walking with the tilting gait or something very abnormal gait, we can say that there must be something wrong with the foot, or if the limb is short and he is putting some weight on one side, he is not putting weight on the other side, he is balancing himself with a very awkward manner. So we are giving some compensation at the bottom or at the heel. If you are giving some compensation at the heel, so that he can be compensated and he can walk normal with the balancing posture of the body. So these are some of the things that appliances is having the very great role in the locomotor disability, so that patient can walk with a normal image. So the orthotic is the science where we can say that we are giving some support to the weak musculature of the body part. So that if we give some support to the weak musculature of the body part, that means after supporting, the joint will only restricted to the normal movement, or what are the limited motion is there, that we are giving in the form of engineering appliances, that is called orthotic appliances. सर, जैसे आपने अभी तक की हमारे डिस्कशन में बताया कि एक्चुअली रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे रिहैबिलिटेशन में हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि मेकिंग द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वोकेशन, सोशल एस्पेक्ट, इमोशनली, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, मेकिंग द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट. देन फर्दर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, जिसमें बताया कि जो एक्टिविटीज कंसीडर्ड की जाती है नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, the individual is not able to perform that activities which is considered normal for others is termed as disability. फिर अगर हम उसको social context में लेते हैं तो then the term comes handicap. और अगर हम handicap जब हो जाता है, अगर उसका हम further medication नहीं करते हैं तो जो problem होती है वो deteriorate हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है problem. ये हमारे एक्सपर्ट ने बताया. फिर हमने देखा कि जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है उसको हम ऑर्थोपेडिकली इम्पेयरमेंट भी कहते हैं, जिसमें जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखी कि कैसे हम देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो लोकोमोटर डिसेबल्ड है, जैसे ही इज़ नॉट मूविंग हिज लेग, और अगर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है या
गेट में प्रॉब्लम है, नॉर्मल गेट पैटर्न जैसे हम लोगों का होता है उससे डिविएटेड है, किसी और तरह की परेशानी है, या हाथों को यूज करने में कोई मोटर प्रॉब्लम है, इस तरह की जो एक्टिविटीज से कोई भी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल या रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हम ये देख सकते हैं कि किस तरह की बच्चे में, एडल्ट है या बच्चा है छोटा, उसमें किस तरह की परेशानी है। और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, जैसे पोलियो होता है, स्ट्रोक है, पैरालिसिस पेशेंट्स है, लाइक पैराप्लीजिया है, क्वाड्रिप्लीजिया है, कॉन्जेनाइटल जो जन्म से ही बच्चों को कोई परेशानी है, या एम्प्यूटेशन की कोई प्रॉब्लम है। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कंसीडर करते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि जो एक्टिविटीज हम नॉर्मल जो इंडिविजुअल के लिए कंसीडर करते हैं कि वो आराम से कर सकते हैं, उनको दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको परफॉर्म करने में परेशानी होती है। सर जैसे ये आपने डिस्कशन में बताया, इसके वी आर मूविंग टू द फर्दर ऑन टू द डिस्कशन, तो आगे इसमें क्या बताना मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के जो भी अप्लायंसेज हैं वो या तो प्रोस्थेटिक्स हैं या ऑर्थोटिक्स हैं। अगर इस फाइंड्स को हम दोबारा दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक। ऑर्थोटिक अप्लायंसेज वे अप्लायंसेज हैं जिसको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे पोलियो की पाँव है, पोलियो की पाँव में अगर वो वजन रखेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि पैर में मसल्स में कोई जान नहीं है। हमें मालूम पड़ गया कि पोलियो की लिम्ब के अंदर जब मसल चार्टिंग हम करते हैं तो मसल चार्टिंग के दौरान हम पाते हैं कि इसके मसल की पावर 0 है या 1 है या -1 है, 2 है। तो ऐसी नॉर्मल पावर होती है वो 5 होती है। अगर मसल्स में पावर ही नहीं है तो वो खड़ा कैसे होगा, अपना वेट कैसे पैर में टॉलरेट करेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले मसल चार्टिंग करने के बाद में मालूम कर लेते हैं कि क्या इसको किसी इंजीनियरिंग अप्लायंसेस की या किसी सपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं है, और है तो कितनी है, कितने रेंज में। जैसे घुटने के ऊपर कुछ अप्लायंसेस अगर हम लगा रहे हैं तो घुटने के अंदर भी घुटने का मूवमेंट पूरा आना चाहिए, तो उस तरीके का जॉइंट बनना चाहिए जो घुटने का मूवमेंट ले सके। या फिर एंकल जॉइंट है तो एंकल के जितने एनाटॉमिकल मूवमेंट होते हैं वह सभी मूवमेंट उसके अंदर आने चाहिए, तभी हम उसको नॉर्मल तरीके से अप्लायंसेस के जरिए चला पाएंगे। तो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ऑर्थोटिक अप्लायंसेस के बारे में। ऑर्थोटिक अप्लायंसेस वह अप्लायंसेस हैं जो कि सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट और करेक्शन देते हैं, और चलने में आदमी को बिल्कुल नॉर्मल की तरह वो चला देते हैं। तो ऑर्थोटिक अप्लायंसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर जैसे आपने हमें बताया कि जो एड्स एंड अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल लिया पोलियो का, जो उसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट हम देखते हैं, असेसमेंट करते हैं कि मसल पावर कितना है, मोटर एग्जामिनेशन हमने किया, डिपेंडिंग ऑन दैट ऑल द असेसमेंट इज डन, और उसमें फिर हम देखते हैं कि पेशेंट को किस चीज की जरूरत है, उसी के आधार पे हम एड्स एंड अप्लायंसेस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो एग्जैक्टली सर, जो हमारी जो टर्म्स हैं ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेटिक्स, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है? हाँ, तो ऑर्थोटिक के बारे में मिस्टर पांडियन आपसे बताएंगे। जी। Good afternoon to everybody. Before I start, I would like to inform that, as my Dr. Ranga said, role of aids and appliances in locomotor disability. The aids and appliances, whatever we are providing to the patients, aids and appliances are playing a vital role in the rehabilitation setup. Because once the patient is disabled, the patient cannot be able to come back to the society without any sort of rehabilitation, like providing aids and appliances, whether it is in the form of orthosis or it is in the form of prosthesis. So now we are discussing about the orthosis. I would like to say, what is orthosis? Orthosis is a scientific external device. It is used in the rehabilitation for the support of the to correct the weakened part, or to support the weakened part, to correct the deformed part of the limb. That means if the person is having any weakness in the limb, that is lower extremity, so the person needs support. If the person is having any deformation in the lower extremity, then the person needs to be corrected. So this is the external scientific device. The device is fitted external to the body part, so that it will act as a scientific manner, providing some support, providing some correction to the patient, and in this way the orthosis is functioning. So how we are deciding the orthosis, what type of orthosis is to be given to the patient, what sort of correction to be given to the patient, this we have to assess with the patient. सर जैसे आपने ऑर्थोसिस का मतलब बताया, ऑर्थोसिस मतलब ये एक साइंटिफिक एक्सटर्नल डिवाइस है जिसको हम देते हैं कि लिम्ब में किसी भी तरह की कोई परेशानी है
उसको ठीक करने के लिए उसको नॉर्मल एज अ Either नॉर्मल you can correct the deformity, or you can prevent the deformity, Yeah. or you can support the weakened part of the limb. So these things can be achieved. तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्थोसिस प्रोवाइड Yes, करते हैं. yes. So again, next is what is orthotis? Orthotis. Who can do this work? That means the orthosis cannot be made by everybody. The orthosis can be made only by the qualified professionals who knows about the orthotic industry. So orthotist, the practitioner who provides care to the patient with the disabling condition. That means the person who is having any sort of disability, disabling conditions of the limb and spine, by designing, fabricating, fitting the patient with an orthosis. In providing the orthosis, the orthotist is responsible for formulating its design, selection of materials, measurements, performing fitting, including static and dynamic alignments, evaluating the orthosis on the patient, and instructing the patient how to use this. That means the entire responsibility of the orthotist is based on the right from the beginning to check the patient what sort of appliance he needs, and to check the patient what sort of device and what sort of joints should be given, and what sort of material should be selected, how to use the material, how to use the orthosis. So entire responsibility falls on the orthotist. Then only he can able to provide a proper care to the patient. इसका मतलब जैसे हर फील्ड में उनके एक प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इसी तरह से जैसे हम इस रिहैबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो ऑर्थोसिस प्रोवाइड करते हैं वो ऑर्थोटिस्ट होते हैं. Yes. जिनको पूरी जानकारी होती है इस बारे में कि वो जो भी इंडिविजुअल्स को जो भी परेशानियां, उनकी जो भी नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके आधार पे उनको क्या चीज प्रोवाइड करनी है जो उनके लिए यूजफुल है, जिससे कि आपने बताया कि जो उनकी डिफॉर्मिटीज है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी तरह की परेशानियां उसके लिए यूजफुल है. Yeah. तो सर इसमें जैसे ऑर्थोसिस को हमने देखा, तो प्रोस्थेटिक्स का इसमें क्या रोल है? प्रोस्थेटिक्स का डिस्कशन शायद अभी साहब ने बताया कि नहीं, इसमें हम लोग आज ऑर्थोटिक के बारे में कर रहे हैं. प्रोस्थेटिक का हम लोग, क्योंकि ये है एक बॉडी का रिप्लेसमेंट होता है जी कि प्रोस्थेटिक में क्या है, जैसे किसी का पैर कट गया है, जी आपका पैर कहाँ से लगना है, कैसे लगना है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक साइंस. तो आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑर्थोटिक के ऊपर कर रहे हैं कि ऑर्थोटिक का क्या रोल है लोकोमोटर डिसेबल्ड के में. तो हमारी पूरी डिस्कशन जो है वो आज ऑर्थोसिस के ऊपर होगी कि हम उसको रिहैबिलिटेट कैसे कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को यूजिंग एन ऑर्थोसिस विच इज एन साइंटिफिक एक्सटर्नल डिवाइस. तो मैं अपने व्यूअर्स को फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगी, अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज कॉल ऑन टोल फ्री नंबर, और हमारा टोल फ्री नंबर है 180011208265111613. हमारा फैक्स नंबर है 26511609. सर जैसे अभी हमने देखा कि ऑर्थोसिस का मतलब क्या होता है, कौन प्रोफेशनल्स करते हैं, तो इनका रोल क्या है रिहैबिलिटेशन में? The role of orthosis in the rehabilitation, that means I told in the beginning itself, it plays a vital role. Aids and appliances plays a vital role in the process of rehabilitation to assist the person in standing and walking. That means the main achievement of the role is the main achievement of the aids and appliances is to make the patient to stand and walk. Okay. In second thing, it also supports the person's weakened part of the body and assisting the person for his maximum possible anatomical and functional position of the affected part. That means the once we are giving the appliances to the patient, after providing the appliance, the patient should be able to stand and the patient should be able to walk, and he can able to maintain his normal anatomical posture of the body. Then only the appliance is considered to be a successful one. Otherwise the appliance is not a good one. मतलब विद इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो उसको मैक्सिमल जो उसकी कैपेसिटी है उसको यूज करके हम उसको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उसके लिए वो उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है. Yeah. Second thing, अगर उसको next if you can see what's the role of the orthosis. The orthosis is the I told earlier, it is an external device. The device is functioning under some scientific manner. It's not functioning under any other manner. It's functioning in the scientific manner.
the orthosis is providing some sort of force system. Because of the force system only the orthosis can able to function. The force system can limit the or assist the movements, because the orthosis utilizes the force, because the force is given by the external force which is limiting or assisting the movements. And the thing is, limiting motion may reduce the pain, because once the patient is having pain in the any part of the leg, if we are limiting the movement, the pain will be reduced. A flexible deformity can be corrected by an orthosis. The corrective force must be balanced by proximal and distal counter forces. The design should be simple for easy and donning and doffing. The fixed deformity can be accommodated within the orthosis. It will prevent the progression of the deformity. The orthotic adjustability is very much essential for children to accommodate their growth and for patients with the progressive disorders. The orthosis must be useful and serve for the real purpose. So these are all the role of the orthosis. Apart from this, the orthosis should be comfortable and the pressure should be distributed over the largest possible area. If the orthosis does not add any significance to their function, the patient will discontinue its use. Cosmetics is also one of the important factors to be considered. So the points whatever I said, all the points should be compiled within the orthosis itself. Otherwise the patient can't use the orthosis, because if the patient is having any deformity, the deformity should be corrected. If the patient is having any problem, any progressive deformity, the orthosis should have such a provision that can be gradually adjusted day by day, so that the orthosis cannot be replaced and it can be adjusted. And the orthosis is providing some external force. The force should be applied equally on the larger area of the limb, so that undue pressure can be prevented from the patient. इसका मतलब कि जो भी हम ऑर्थोटिक डिवाइस इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ये उपयोग है कि जो भी उसको परेशानी है उसको वो उसमें इतनी क्षमता हो कि वो फुली उसको करेक्ट कर सके, ताकि वो उसका जो उसको यूज करके अपने आप को फंक्शनल कर सके. यस. नहीं, जैसे इन्होंने भी पॉइंट बताया कि लार्जर एरिया का सपोर्ट हम लोग लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक ही पॉइंट पे अगर प्रेशर देंगे तो वो प्रेशर इतना पेनफुल होगा कि वो उसके वेट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा. तो प्रेशर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय सॉफ्ट पैडिंग और सम बैंड्स. तो डिस्ट्रीब्यूट होने पे ही विल फील कंफर्टेबल एंड ही कैन यूज दैट अप्लायंसेस. अदरवाइज अगर उसको चुभ रहा है, एक ही पॉइंट पे प्रेशर आ रहा है, तो ही विल डिसकंटिन्यू दैट एंड ही विल नॉट यूज. अगर वो यूज नहीं करेगा तो उसकी डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाएगी और ऑकवर्ड गेट पे चलेगा और कुछ नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. तो इट इज बेटर टू हैव ए वेरी कंफर्टेबल ऑर्थोसिस. तो इट शुड बी डिजाइन्ड बाय एन ऑर्थोसिस. हाँ, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वो कंफर्टेबल हो जी और इजी इन यूज हो. Comfortable at the same time the patient can able to wear the orthosis and remove the orthosis without any trouble. That is the main aspect, because to wear the orthosis, if he needs any support from others, so that's not a successful orthosis. So patient has to wear the orthosis on his own and to remove the orthosis on his own. At the same time, if suppose for young patients, school going, college going, so either a boy or girl, they won't like the orthosis should be looking very awkward. So they need a orthosis that should look like cosmetically good, so that they can able to wear it. If it looks like awkward material, the purpose of the orthosis is not served. So cosmetics is also one of the main factor to be considered. सर, जैसे ये आपने बताया कि किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वाइल डिजाइनिंग द ऑर्थोटिक डिवाइस फॉर एन इंडिविजुअल जिसको इसकी जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन हिज नीड्स, क्या क्या परेशानी है उसको, जो कि मेनली हम देखते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में. और सर ऐसा भी होगा कि जैसे अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, उसके आधार पे हम ऑर्थोटिक डिवाइस प्रोवाइड करते हैं. Definitely, because orthosis is a single term. It is representing the entire field of orthosis. That means it's only one term. It represents all the types of orthosis. But if you go into the detail, the orthosis is having a lot of variations. That is, we can group into 4 categories, like a specification of orthosis. What is specification means? You can specify the orthosis in such a manner. It is one is called as a foot orthosis.
Foot orthosis means which is used within the foot itself. That is, we can use the orthosis within the foot or shoe. Second thing is called as ankle foot orthosis, that is usually called as AFO, and third is called as knee ankle foot orthosis, that is KAFO, and hip knee ankle foot orthosis, that is HKAFO. So these are the specifications of orthosis. मीन्स द टर्म इटसेल्फ एक्सप्लेनिंग द नेम कि Yeah. इसमें हमें जैसे आपने बताया कि HKFO जैसे हिप नी एंकल फुट मतलब Orthosis. पूरा लोअर लिम का Cover कर लेते हैं. ऑर्थोटिक वो डिवाइस हो गया. मतलब Yeah. नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इंडिविजुअल को जो परेशानी है उसके लिए हमने कौन सा डिवाइस उसको दिया गया है. Yeah. If you go again further in detail about what is foot orthosis. Foot orthosis means when the deformity is limited within the foot and the foot region with no ankle involvement. That means the ankle joint is not at all involved. Only the foot is involved. For example, pes planus. That is the most common deformity in nowadays. Pes planus means flat foot. A lot of people are suffering from pes planus deformity. So, for example, pes planus is that condition in which, due to the absence of the longitudinal arch of the foot, the patient needs a correction only in the foot by providing arch supports. So, in this condition, we are not involving the ankle joint. We are involving only the foot, and the correction should be made within the foot itself, and the foot orthosis is made which is kept inside the shoe itself. That is called as foot orthosis. So, जैसे अभी आपने डेफिनेशन में हमें बताया कि लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो होती है वो नहीं होती पेस प्लानस की जो कंडीशन होती है जिसमें हम फुट ऑर्थोसिस प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली जो ये जो आर्च हमें प्रोवाइडेड होती है उनके मेन फंक्शंस क्या हैं? The main function of the foot longitudinal arch, there are three arches in the foot. One is lateral longitudinal arch, and one is medial longitudinal arch, and other one is anterior transverse arch. There are three arches in the foot. These arches are playing a very big role while the patient is standing and when the patient is walking and the patient is running. Not even for patient, it's for normal person also. And when the person is standing, it is acting as a shock absorber. Because if the arch is not there, nobody can walk. Because if the arch is not there, means if you walk, you will get very severe pain in the foot. So it is acting as a shock absorber. Whenever you walk, there is a ground reaction force acting from the ground, because your body weight is there and your ground reaction force is acting to the body. So these two forces are meeting at the foot level only. So at that level, when the arches gets elongated, foot gets elongated and foot gets widened, so that the shock is absorbed there itself. So then only the person is not getting any pain to the body. Otherwise, if the shock absorber is not there, the person will get pain. We can't able to run, we can't able to walk. So that is the main purpose of the arch. तो हमारा प्रॉपर रनिंग और वॉकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. Definitely. सर जैसे ये जो आर्च जो डेवलप होती है कि इसका कोई जैसे पर्टिकुलर टाइम है या सिंस बर्थ इट इज डेवलप्ड इन द चाइल्ड? No, arch is not developed in the childhood. Immediately after birth, no child will have a arch. The arch will develop after 10 months, 1 year only, when the child starts walking. So unless when the child starts walking, the arch will not develop, because once the child puts his weight on its own limb, then only the arch gets developed. So it gets fully developed within 5 to 6 years of his age. The arch will fully developed. तो ग्रेजुअली मतलब जो आर्च बनना शुरू होती है जब बच्चा चलना शुरू करता है, yes. अपना पैर रखता है और आगे बढ़ना शुरू करता है, प्रोपेल करता है, तो उससे धीरे धीरे आर्च शुरू होती है और ऑलमोस्ट 5 to 6 years तक फुली डेवलप हो जाती है. Now I would like to show some slides. So these are the pictures the patient is suffering from. Yes, I told you about the pes planus deformity. So this is the picture showing that person is completely collapsed arch, so that you can see the medial aspect of the limb is completely having contact with the ground. Otherwise, normally if a normal person stands, the medial part of the limb will not having contact with the ground. So here the middle person is completely having contact with the ground. So this is the role of the orthosis. As I told, this is a foot orthosis. This is a foot orthosis made of a thermoplastic material, which is covering only the foot area, which is not even covering the ankle area also. So this can be fitted to the patient very easily with only one strap is provided in the orthosis, and patient can able to wear it very easily. Patient can able to remove it very easily. That's why I told in the earlier, donning and doffing should be comfortable to the patient.
and patient can use any kind of footwear, because it will not interfere in the using the footwear also. The patient can use any kind of footwear. This is another view of foot orthosis. These are the same one. The patient can use it without any difficulties. This is one more deformity. In this deformity, angle is also involved. That is called as congenital talipes equinovarus. Congenital means it's right from the birth that deformity is developed. Talipes equinovarus. The combination of lot of deformities is known as congenital talipes equinovarus, which can also be corrected by providing CTEV corrective shoes. So in this picture also you can see this. This is for newborn children, those who are having congenital talipes equinovarus, which can be fitted to the children, and the children will be kept. This is only meant for the children, those who are not walking, because once they started walking, they will not be provided with this type of splint. This is called as Dennis Brown splint. And before we go, you can see what's the normal footwear, how the normal footwear should be, because once you are not knowing about the normal footwear, it is difficult to understand the abnormality. So this is the normal footwear, how it should be. What's the role of the normal footwear? You can see everybody is using shoes and sandals, chappals, everything, but we don't know. A lot of the people doesn't know what sort of footwear should be selected for the particular foot type. So here you can see shoe performs the vital functions of transferring the body weight to the floor during walking. We are purchasing the shoe for a cosmetic purpose. It's not a good one. We should purchase the shoe for this purpose, because it is playing that role, that it is transferring our weight from body and it goes to the shoes, and then it goes to the floor. So shoes plays a vital role in this aspect, and protecting the wearer from any hazards from the environment. So because once the wearer is using the shoes, his foot is completely protected. So that is the main role of the shoes. And well designed shoe or boot is the necessary foundation for lower extremity orthotics. The shoe is not well designed, properly modified, then it is very difficult for the patient to use the shoes for the orthotic purpose. इसका मतलब जो शूज हैं वो जरूरी नहीं है कि हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी के इंडिविजुअल्स के लिए ही उनके पैरामीटर्स कंसीडर करें. जो हम शूज यूज करते हैं उनमें भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए. Definitely, because foot nowadays the foot problem is increasing day by day. Footwear is one of the main aspect why the problem is coming. For example, I can say female using high heel chappals, high heel sandals they are using. Once they are using high heel sandals, you know very well, once they are lifting their heel part very much height, their center of gravity is shifting towards anterior. Once the center of gravity is shifting towards anterior, then they have to bend their trunk posterior. Then only they can able to balance. Otherwise, the center of gravity cannot be balanced. So to balance all these things, they are making changes in their normal posture. Once they are making changes in their normal posture, if it goes on long-term basis, on the posture will become a deformity. Then the person will get a low back pain. Lot of complications they will develop in the spine. इस तरीके से मतलब जैसे नॉर्मल फुटवेयर आपने बताया जो हाई हील्स होते हैं उनसे भी हमारा बैलेंस खराब हो सकता है और जो हमारा नॉर्मल पोस्चर है वो भी डेविएट हो सकता है. डेफिनेटली इट विल डेविएट. इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लो किसी का वजन 50 किलो है जी. अब 50 किलो वजन दोनों पैर के थ्रू ही हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे 50 किलो वजन दोनों पैर पे आ रहा है. अब वो जब बिल्कुल नॉर्मल है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 50 किलो वजन अगर कहीं डिफॉर्मिटी नहीं है तो 25 किलो एक पैर पे 25 किलो दूसरे पैर पे, यानी 25-25 किलो हमारे दोनों पैर पे वजन आ रहा है. अब आगे पैर पे भी किस तरीके से वजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. हमारे जैसे 5 उंगलियां हैं तो 5 उंगलियों पे सबसे बड़े वाले पर ज्यादा वजन आएगा, फिर उससे कम, उसका एक अनुपात है. उसी तरीके से अगर 25 किलो को हम 2 में डिवाइड कर दें फुट में तो 12.5 किलो यहाँ आ गया और 12.5 किलो हिल में आ गया. तो ये वेट अगर आपका प्रॉपर वे में नहीं है तो हम कहेंगे कि बॉडी का कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है. तो इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए हम फुट के अंदर पे एक ऐसी ऑर्थोसिस हम फिट कर देते हैं जिससे वजन उसके ऊपर लेके सही ढंग से उस जगह पर उतना वजन ट्रांसफर कर दे, मतलब जो हमारा वजन ग्राउंड पर आ जाए. जी, प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है. अभी जैसे मान लो किसी के छोटी सी एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, किसी के एडी में कांटा लग गया, कांटा लगने के बाद में वो कैसे चलेगा,
वो पंजे के बल चलेगा। यानी कि ये हो गया कि पंजे पे उसका कम से कम बॉडी का आधा वजन पंजे पे आ रहा है। जब वो पंजे पे वजन डालेगा तो एड़ी को ऊंची रखेगा। ऊंची रखने के बाद में जिस तरीके से चलेगा आप इमेजिन कर सकते हो, मेरे ख्याल से सभी ने एक्सपीरियंस लिया होगा। उसी तरीके से अगर आगे पंजे में अगर कांटा लग गया, कांच चुभ गया, तो वो कम से कम एडी के ऊपर पूरा वजन रख के चलेगा। अब एडी के ऊपर जब वजन रखेगा तो उसका जो नॉर्मल चलने का जो पैटर्न है वो कभी नहीं रहेगा, दैट इज एबनॉर्मल पैटर्न। यानी उसको दूर करने के सबसे पहले तो हमें कांटा या कांच चुभा है उसका इलाज करवाना है, यानी मेडिकल इंटरवेंशन तो बहुत जरूरी है। अगर वो ठीक हो गया उसके बाद में रिहेबिलिटेशन, यानी दर्द हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं फुट के अंदर करेक्शन करके हम उसको भी हम लोग कंफर्टेबल बना के कि भाई वहां पर उतना ही वजन लो जितना तुम्हारी बॉडी के मुताबिक आ रहा है। तो ये सब चीजें ऑर्थोटिस्ट वेल डिजाइन करके कर सकता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनके ऊपर हील में पेन होता है। अब जब वो ऑर्थोपेडिक में दिखाते हैं तो एक हम डिजीज कहते हैं उसको, कैल्केनियम स्पर हो गया, यानी कि जो हील की जो हड्डी है वो बढ़ गई है। वो बढ़ने से, स्पर होने से उस पर वजन नहीं ले पा रहा है। उसकी वही पोजीशन है जो हील में कांटा लगने से होती है, यानी उसी खुद की हड्डी उसकी सॉफ्ट टिश्यूज में चुभ रही है। अब ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, अब उसको चलना तो बंद कर नहीं सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि तुम्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो इट बिकेम ए वेरी कॉस्टली अफेयर भी हो जाता है। दूसरा वो जाते हैं ऑपरेशन के नाम पे कुछ डर जाते हैं, तो हम लोग उसके लिए एक ऑर्थोटिक मैनेजमेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं स्कूप्ड हील। यानी अगर हम जूते को इस तरीके से बना दें कि यानी उसकी जो दर्द वाली एरिया है वो वहां अकोमोडेट हो जाए, तो उसके प्रेशर पॉइंट देखते हुए उसको अकोमोडेट करके उसको हम स्कूप्ड हील कहते हैं। स्कूप्ड हील के ऊपर आराम से चल लेता है, भले उसकी वो दिक्कत वहां आ रही है पर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ही कैन वॉक वेरी कंफर्टेबली विदाउट ऑपरेशन। तो बेसिकली मतलब प्रॉपर डिजाइनिंग हो गई। हाँ। हर चीज मतलब वेट का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना जिससे हम अपनी इमेज को सही रख के चल सकें और जहां वजन जहां लेना है वहां उतना वजन ले सकें, यही ऑर्थोटिक साइंस है। टेकिंग कंसिडरेशंस ऑल द फैक्टर्स, लाइक जैसे यू हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स कि पहले उसका सबसे पहले मेडिकल इंटरवेंशन, फिर उसके बाद स्टिल द इंडिविजुअल इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फिर उसको रिहैबिलिटेशन में लाना और उसके हिसाब से उसको जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो देना। अभी जिस तरीके से एक को बचपन से जो बीमारी हो जाती है जिसमें सारी डिफॉर्मिटी मिली हुई है, कंजेनिटल टेलिपस, इक्वाइनो वायरस, यानी एक ऐसी मिली जुली पैर बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। अगर हम उसको शुरू में ही बचपन से इसको करेक्ट करने की कोशिश करें या सर्जिकल इंटरवेंशन करवा लें तो पैर उसका सीधा हो सकता है। पैर सीधा होने के बाद में वो नॉर्मल तरीके से चल सकता है, पर ज्यादा करके क्या होता है, निग्लेक्टेड हो जाता है। कईयों को मालूम ही नहीं होता कि इसका ऑपरेशन होना भी है नहीं होना है, या ऑर्थोटिक मैनेजमेंट उसका होना भी है या नहीं होना है। जब वो नहीं करवाते तो निग्लेक्टेड रह जाता है। जब निग्लेक्टेड फिटी भी हो जाती है तो ज्यादा करके वो ऐसी जगह पे वेट लेना शुरू कर देता है जहां पर उसको वेट नहीं लेना चाहिए, और जब ऐसी जगह पे वेट लेना शुरू करेगा तो वो अननेसेसरी वहां पर घाव हो जाएगा, अल्सर बन जाएगा और वो पेनफुल होते जाएगा। उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। ज्यादा करके फिर ये कहते हैं ज्यादा पेनफुल हो रहा है, इन्फेक्शन हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो भाई इसका तो एम्पुटेशन करना पड़ जाएगा, यानी पैर को काटना पड़ जाएगा। मतलब यहाँ तक की नौबत आ जाती है। तो बेटर है कि अगर हम सही ढंग से सही वक्त पे सही इलाज करवा लें और उसका ऑर्थोटिक मैनेजमेंट या प्रोस्थेटिक मैनेजमेंट जो भी है वो प्रॉपर ढंग से करें तो आगे की ऐसी पोजीशन नहीं आती। तो सबसे पहले तो ये है कि हमको अपने वेट को बिल्कुल सही ढंग पे जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, जैसे हम नेचर ने जो बना रखा है उस ढंग से होना बहुत जरूरी है। सर जैसे जो हमारा जो लोअर लिम्ब होता है उसमें सबसे ज्यादा हमारा वेट बेयरिंग, जो पूरी बॉडी का वेट जो होता है वो वहीं पे जाता है, और उसमें उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना वो सबसे जरूरी बात है, क्योंकि उसी से हमारा जो नॉर्मल गेट पैटर्न है वो बनता है, बना रहेगा। और अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो ऑब्वियसली वो जो गेट पैटर्न है वो डेविएटेड हो जाएगा, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम है या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब छोटी प्रॉब्लम ही जाके बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं बने तो हम लोग पहले से अगर उसका निवारण कर लें तो ज्यादा अच्छी बात रहती है। तो नॉर्मल फुटवेयर के बारे में भी थोड़ा सा मिस्टर पांडियन साहब ने अभी बताया आपको, ये नॉर्मल फुटवेयर पहनना भी बहुत जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि जूता पहनते हैं पर वो एक नॉर्मल फुटवेयर नहीं होता, या उसकी क्वालिटी इस तरीके की होती है कि कहीं ना कहीं पैर में कोई ना कोई दूसरी प्रॉब्लम वो खड़ी कर देता है। तो जो भी जूता पहने वो कम से कम नॉर्मल हो और एक अच्छी क्वालिटी का बना हो, जिसमें हमारे फुट के सारे मूवमेंट खुल के चलें, और सारे मूवमेंट जो भी हमारे जैसे चलते समय हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, टो ब्रेक, ये सारे मूवमेंट उसके अंदर जूते के अंदर आ जाए एंड वी फील कंफर्टेबल इन वॉकिंग।
तो ये वॉकिंग के डिफरेंट स्टेप्स हो गए कि वाइल वॉकिंग हमें कैसे ध्यान रखना है कि हील जी। स्ट्राइक कैसे होनी चाहिए या टो ऑफ कैसा होना चाहिए, जी। मतलब अलग अलग फेजेस में हमारा प्रॉपर तरीका कैसा होना चाहिए चलने का। बहुत जरूरी है। That is possible only if the footwear is perfect. जी। If the footwear is not perfect, then you can't expect normal type of walking to the patient. If suppose the patient is having a little bit of pain in anywhere, so then the patient cannot able to walk in the normal pattern. So when that is the basic foundation. If the footwear is perfect, the person can able to walk without any difficulties. So in this continuation, I would like to say again, if you like to accommodate the deformed foot, the foot is not a normal foot. If it is a deformed foot, any problem is in the foot. If you are try to accommodate within the normal foot here, then the person will get pain. Definitely the person will get the pain and he will have some uncomfort. So here is some examples. Surgical footwear is usually prescribed when the deformity is limited to the forefoot, and the boots are prescribed if the foot is grossly deformed. That means surgical, there is a difference between the foot shoe and the boot. Shoe means the shoe which will not cover the ankle joint, that is called as shoe, and the boot means which is covering the ankle joint and it extends above the ankle level, then only it is called as boot. And now we will come to the ankle foot orthosis. What is ankle foot orthosis? When there is a weakness in and around the ankle joint and foot, the patient can able to ambulate without an orthosis, but the patient may fall or twist the ankle and injure themselves. Therefore, the most common purpose of bracing an AFO, that is ankle foot orthosis, is to ensure safe ambulation. That means in the rehabilitation process, a person who is having a small weakness in and around the ankle joint can able to walk without orthosis also. What it is meaning? The person can able to walk without orthosis also, but if he is walking without orthosis, he may twist his ankle, because there is a weakness in the ankle joint. He may twist his ankle joint. Once that there is a twisting, he may able to fall down. So if he is falling down, again he will increase the deformity. So the main purpose of providing the AFO is to ensure safe ambulation. Ambulation means walking. So the person who is having this kind of difficulties has to wear the AFO, because without AFO also the person can able to walk, but if he is keep on walking without AFO, he may able to develop further deformities, further complications, further problems in his lower extremity. That's why the AFO is been given. So that is to provide safe ambulation. सर यहाँ पे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम है कि वो अपने टोस पे चल रहा है, अपना सारा वेट बियर वो टोस पे कर रहा है, हील स्ट्राइक उसका नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम उसको कौन सा ऑर्थोटिक डिवाइस रिकमेंड करेंगे? The condition what you said, the person is walking on the toes and the heel is not having contact with the ground. This condition is usually called as pes equinus condition. That means the person is having foot drop problem. See, in this condition, the foot can be either the foot drop is in the mild stage, or the foot drop is in the moderate stage, or it is in the severe stage. It depends upon these three stages, the device will vary. If it is in the mild stage, that means the person is when the person is walking, the small amount of the heel is not having contact with the ground. That means that can be stretched, that can be pulled down. We can make an orthosis which will accommodate the foot, and the person can able to walk properly. If the person is having mild level, moderate level of deformity, he will be advised for physiotherapy exercises. Then after the particular amount of exercises, his limb can be stretched down again. Then it is very essential to put the orthosis, because once the exercise is over, if the person is not using the orthosis, again the problem will develop. So after the exercise also, the patient has to wear the orthosis. The third one is the foot is touching, the heel is never touching the ground. That means it is fixed, permanent. If it is permanent, then there are two options. One is the shoe has to be modified according to his foot, or the patient has to go for surgery. If he is going for surgery, after completing the surgery, again he has to use the ankle foot orthosis. जी, मतलब
डिपेंड करता है कि उसकी डिग्री कितनी है, उसकी प्रॉब्लम की डिग्री कितनी है, कि अगर माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, उसके आधार पे हम देखेंगे कि उसको किस तरह की डिवाइस प्रोवाइड की जानी चाहिए। Yes. Again, there is some examples of various types of ankle foot orthosis. It's one is metallic, made of metal, because nowadays metals are less used than the plastics, because plastics are having more cosmetic appearance and plastics are having very lightweight comparing to metal, and the plastics are available very easily also. It can be reused also. Lot of advantages plastics are having. That's why nowadays we are making the ankle foot orthosis, any type of aids and appliances with the help of the plastics. But still, metallic orthosis is also very much important, because the plastic orthosis will not serve for all the patients. If the person is more heavy weight patients are there, then it is difficult for us to provide the plastic orthosis. That time we have to go for a metallic orthosis. So here there is examples of both type of orthosis. एक चीज़ और भी है कि जो प्लास्टिक के अप्लायंसेज हैं वो इंडिया जैसे क्लाइमेट में, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी पड़ती है यहाँ, तो गर्मी में अगर टोटल कांटेक्ट बॉडी के ऊपर रहेगा तो ज़रा अनकंफर्टेबल फील करते हैं उससे। जो हमारे पुराने जो मेटलिक हैं उसमें कम से कम हवा का वो रहता है, और खुले रहने पे कम से कम पेशेंट प्रॉब्लम फील नहीं करता। तो प्लास्टिक के कई बार हम लोग डिस्कार्ड इसलिए करते थे कि इंडिया की जो एक्सट्रीम क्लाइमेट देखते हुए इसको प्लास्टिक को हटा के हम लोग मेटलिक पे ज़्यादा चले जाते हैं। मतलब अगर एक की कॉस्मेटिक अपीयरेंस उसका एडवांटेज है तो उसका कोई डिसएडवांटेज भी है। Next is knee ankle foot orthosis. The name itself is telling that the orthosis is encompassing the knee joint also. These orthoses are prescribed to the patients with the lower and upper motor neuron lesions, neuromuscular disorders, and traumatic incidents. Traumatic incidents means like accidents. The orthosis may be used for either functional ambulation or exercise purpose. Whereas in ankle foot orthosis, I told you that main purpose of bracing the AFO is for providing a safe ambulation. Whereas in knee ankle foot orthosis, it is used for either functional ambulation or exercise purpose. Both are solved in this knee ankle foot orthosis. The patient needs stability at the ankle joint as well as at the knee joint. The person who is in need of knee ankle foot orthosis definitely must be having weakness in the knee joint and also in the ankle joint. Whereas the person who is using ankle foot orthosis is having weakness only in the ankle joint, not in the knee joint. This is again various two types of knee ankle foot orthosis. One is knee ankle foot orthosis metallic one, and the other one is knee ankle foot orthosis plastic one. Next is hip knee ankle foot orthosis. These orthoses are prescribed for the patients with the similar conditions explained in the KF, that is knee ankle foot orthosis and the AF also, with the involvement of the hip joint. Whereas in KFO the hip joint is not involved, in HKFO hip joint is also involved. This is the metallic hip knee ankle foot orthosis, which is mostly used for the patients in our institution also. Before going to next stage, I would like to inform you that the orthosis whatever we are making is not made of ready-made appliances, because each and every individual is having its own body structure. No body structure of two individuals will look like similar. Even the face doesn't look like similar, length of the limb doesn't like similar, everything will have a change. So whenever the patient comes to the department for any sort of aids and appliances, it's our responsibility to take the individual measurement of the patient so that we can able to provide a perfect orthosis. Then only the orthosis will do the exact work what it is meant for. Otherwise the orthosis will not perform its duty. So to make the orthosis exclusively for the particular patient, we have to take the measurement of the particular patient, then only we can able to fabricate the orthosis. So for taking measurement is also very much a lot of things to be considered. Number one is accurate measurements and tracings, because if you don't take the accurate measurements of the patient, then it is again the problem will come in the fabrication of the orthosis. So accurate measurements and tracings like circumferences, outline of the paralyzed limb is to be considered for fabrication of the orthosis.
So main thing is outline means we have to take the total outline. One is on the medial aspect of the limb, one is on the lateral aspect of the limb. So circumference of the various parts of the limb. So these things should be taken accurately. If these measurements are not taken symmetrically, systematically, there will be a chance of error in fabricating the orthosis. Otherwise, the orthosis will not perform the basic need of the patient. So, by considering all these factors, we have to take the measurement effectively. And taking measurement is also one of the big tasks, because if a patient is having a scientific, that is a natural limb, that natural lower extremity. What we are making is a scientific external equipment. That scientific external equipment has to be matched with the patient's natural limb. So matching mechanical appliances with the scientific limb is also a big task. How to match these things? Because the natural limb is having lot of movements, ankle joint is having movements, knee joint is also having movements, hip joint is also having movements. That's a God gift movements. We cannot replace all this movement in the mechanical appliances, but up to some extent we can able to match it. So that matching is also one of the main aspect. How we can able to match it? There are some guidelines, there are some criteria for taking measurements, because mechanical ankle joints are there. What we are having is the anatomical ankle joint, which is having a variety of movements in the ankle joint. We can able to walk in the normal surface also, we can able to walk in the abnormal surface also, uneven surface also. But the patient those who are using orthosis, it's difficult for them to use their limb, use the orthosis in the uneven surface, because there is a mechanical device is encompassing their limb. So before going into the measurement taking procedures, we have to follow some criteria. That is, one is mechanical ankle joint. Mechanical ankle joint has to be fixed at the level of the distal tip of the medial malleolus. Distal tip of the medial malleolus is the reference point for the mechanical ankle joint in the orthosis. Number 2 is the mechanical knee joint. You know very well that anatomical knee joint is a polycentric knee joint, because it is having a lot of axis. While the knee joint goes into flexion and extension, the axis of the knee joint is also changing. That's why it is called as polycentric. Whereas the knee joint what we are providing in the orthosis is a single axis knee joint, which is not having multi-axis. So matching the single axis knee joint with the multi-axis polycentric anatomical joint is also a big task. So as per the biomechanical studies done in the biomechanical lab, almost all the axis of the polycentric knee joint is crossing at the level of 19 mm above the medial tibial plateau. That's why we are taking that point as a reference point for the mechanical knee joint in the orthosis. Next is the hip joint. Hip joint, anatomical hip joint is a ball and socket type, whereas the mechanical hip joint what we are using in the orthosis is the single axis mechanical hip joint. 6 mm anterior and 6 mm superior to the proximal tip of the greater trochanter. This is the bony landmarks. Whatever the things what I have said is the bony landmarks. Distal tip of medial malleus is also bony landmark. 19 mm above the medial tibial plateau is also bony landmark, and 6 mm anterior, 6 mm superior is also the bony landmark. So by considering these bony landmarks, we used to design the orthosis, we used to place the joints in the mechanical device, then these joints will coincide with the patient with the anatomical structure. तो इसका मतलब हम जो सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे कि एनाटॉमिकली कैसा होना चाहिए, मैकेनिकली कैसा होना चाहिए, और जो बोनी लैंडमार्क्स हैं जो प्रोफेशनल्स को पता होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कितना मतलब डिस्टेंस होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या मेजरमेंट्स होनी चाहिए और किस हिसाब से हमको उसको डिजाइन करना है ताकि वो कंफर्टेबल हो और वेल डिजाइंड हो. Yes. Because coinciding the joints, that is anatomy, coinciding the mechanical joint with the anatomical joint is very much important. Otherwise the range of movement of the joints, anatomical knee joint will flux to 20 degrees, mechanical joint will flux 15 degrees. That means both the knee joints are not coinciding to each other, so then the patient will get uncomfort, patient will not able to perform his duties. So patient will discard the orthosis, because after using the orthosis, patient is unable to perform his normal activity. So he will discontinue the use of the orthosis. So main factor is to
coincide all the anatomical joints with the mechanical joints in the orthosis. That is the main aspect. सर जैसे आपने बताया कि मेन जो हमारा फोकस है टू कोइंसाइड द एनाटॉमिकल विद द मैकेनिकल जॉइंट्स, ताकि वो कंफर्टेबल हो वो डिवाइस और उसका पूरा यूजफुल हो सके। जैसा कि अभी तक हमारे एक्सपर्ट ने हमारे को इस सेशन में बताया, जो हमारा बेसिकली जो सेशन था रोल ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसमें अभी तक हमने अपने डिस्कशन में इतने सारे पॉइंट्स देखे और उनको एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ हमारे एक्सपर्ट ने एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने देखा कि रिहैबिलिटेशन का एक्चुअली मीन्स क्या होता है, और फिर हमने देखा कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं और इंडिविजुअल्स को किस बेसिस पे हम उसमें नेम कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो हैंडीकैप है या इम्पेयर्ड है। और उसमें हमने देखा कि ऑर्थोसिस जो हमारा मेन आज का डिस्कशन का पार्ट है, ऑर्थोसिस का जो साइंटिफिक एक्सटर्नल डिवाइस है जो हम देते हैं इंडिविजुअल्स को डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स एंड द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग देयर लोकोमोशन, उसमें हम क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस हिसाब से हमें उनको देनी चाहिए, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जिसमें हमने देखा कि ऑर्थोटिस्ट जो होता है, जो प्रोफेशनल होता है, जो हमें ये डिवाइस प्रोवाइड करता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है इंडिविजुअल्स की, उसके हिसाब से अगर उसको फुट ऑर्थोसिस चाहिए या एंकल फुट ऑर्थोसिस चाहिए, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस या हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये जो 4 तरह के अभी हमने डिस्कस किए और हमारे एक्सपर्ट ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे पेस प्लानस, पेस इक्वाइनस, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी हमने देखा CTEV जो बाय बर्थ होती है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन और सर्जरी टाइम पे दें बच्चे को तो वो करेक्ट की जा सकती हैं। नॉर्मल लाइफ में भी हमारी परेशानियां हो सकती हैं, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस डिस्कशन को हम कैरी ओवर करेंगे अपने इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिस इज टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart,
I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. Welcome back to our session where we're discussing about the aids and appliances who have a role in rehabilitation for the locomotor disability, जो हम अपने एक्सपर्ट के साथ उसको डिस्कस कर रहे थे. ब्रेक में जाने से पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया इस टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली देखा था कि ऑर्थोसिस कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनको ऑर्थोटिक जो प्रोफेशनल होता है वो प्रोवाइड करता है, कीपिंग इन माइंड्स ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल, के एक इंडिविजुअल को किस चीज़ की किस हिसाब से ज़रूरत है, उसको क्या परेशानियाँ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको चलने में कितनी दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा. और हम अब डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट क्राइटेरिया कि हम किस हिसाब से हमें उनको डिज़ाइन करना चाहिए, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे. तो हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि इस रिगार्ड में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ वो कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. हम अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं. सर जैसा कि मैंने आपको बताया मैकेनिकल जॉइंट और एनाटॉमिकल जॉइंट. अब मैकेनिकल जॉइंट क्या है और एनाटॉमिकल जॉइंट क्या है? एनाटॉमिकल जॉइंट वह है जो हमारे बॉडी में हैं और मैकेनिकल जॉइंट वो है जो हम ऑर्थोसिस के लिए मैकेनिकल तरीके से बनाते हैं. अभी जैसे हमारे मिस्टर पांडियन साहब ने बताया कि दोनों को कोइंसाइड होना चाहिए. अभी जैसे एंकल जॉइंट की मूवमेंट जब भी हम मैकेनिकल ले पाएंगे जब इन दोनों को कोइंसाइड करेंगे, यानी जो मैकेनिकल मूवमेंट होगी वो कि वो एनाटॉमिकल होगी. तो इसी तरीके से नी का है. अब नी में जो हमारे मूवमेंट है, जैसे दो मूवमेंट हमने मेन माने हैं, जैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. ये दोनों मूवमेंट के हम मैकेनिकल में भी दोनों मूवमेंट ले लेंगे. अब एक में होता है कितनी लेनी है, रेंज ऑफ मोशन कितना होना चाहिए. रेंज ऑफ मोशन का मतलब है कि जैसे घुटना है, घुटना हमारा कितना फ्लेक्शन में जा रहा है, कितना एक्सटेंशन में जा रहा है. उसी तरीके से हम अपने मैकेनिकल जॉइंट को भी बनाएंगे. उसी तरीके से हमारा हिप जॉइंट है. हम लोग वैसे ऑर्थोसिस में हिप जॉइंट के खाली दो ही मूवमेंट काम में लेते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जो हमारे लोकोमोशन में मेन काम में आता है. बाकी हिप के और भी मूवमेंट है, अबडक्शन, अडक्शन, सरकमडक्शन, ये मूवमेंट हमारे ज़्यादा करके ऑर्थोसिस में नहीं आते हैं. तो अब हम आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना है और मेजरमेंट लेने के बाद में ऑर्थोसिस किस तरह से पेशेंट को कंफर्टेबली फिट करनी है. उसके लिए क्या क्या हमारे लैंडमार्क है जहाँ पर हमने प्रेशर देना है, कौन कौन से लैंडमार्क है जहाँ पे हमने प्रेशर को अवॉइड करना है. क्योंकि हमने प्रेशर को अवॉइड भी करना पड़ता है क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ जगहें ऐसी है कि जहाँ हमको प्रेस कर दिया तो और ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी. जैसे हेड ऑफ द फिबुला है या और भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने को वेट को रिलीव करना है, तो हमने बैंड को कहाँ लगाना है, कितना ऊपर रखना है, कितने नीचे रखना है. तो इसी के बारे में हम बताएंगे कि तीनों बैंड को हमने HKF में किस तरीके से फिट करने हैं. तो मेजरमेंट क्राइटेरिया फैब्रिकेशन ऑफ ऑर्थोसिस में आप देखेंगे किस तरीके से बैंड को हम लोग क्या लोकेशन पे हम लोग फिट करते हैं मैकेनिकली. While continuing again with the parts of the caliper, because I told about ankle joint, knee joint and hip joint. Now we are coming to the other parts like calf band, thigh band and pelvic band. Again, these bands are also playing an important role in designing the orthosis, because these joints, ankle joint, knee joint and hip joint, are a structural part of the orthosis. Structural part means it is holding the remaining parts. Like a building, pillars are a structural part. So in the orthosis, these uprights, knee joint, ankle joint and hip joints are the structural parts which is connected between these three bands, calf band, mid thigh band and thigh bands. So again, while coming to the calf band should be fitted at the level of the maximum calf muscle, because if you can see in the back of your leg, that is below the knee joint level, there is a bunch of muscles will be there, that is called as calf muscle.
that muscle is having a good musculature. So if you put some pressure on that musculature also, the patient will not feel any uncomfort or discomfort. So that's why we are taking that reference point for putting that cough band at that level. That is the maximum cough level. Like our HOD said, we should not put some pressures on the sensitive areas, because pressure tolerance areas are there. The tolerance areas can tolerate the pressures, but the sensitive areas cannot tolerate the pressure. So we should not put any pressure on the sensitive areas. That is the head of fibula, because head of fibula is the sensitive area which is having a lateral popliteal nerve is passing through the head of fibula. So if you put some pressure on that head of fibula, it will leads to some paralysis in the lower extremity. So pressure tolerance area should is maximum cough muscle level, that is to be fitted in the caliper. Second thing is thigh band. Thigh band is fitted in the thigh level, that is in the 38 millimeter below the perineum. That is, perineum is the medial aspect of the limb which is having a groin area, otherwise you can say it is a groin area. It's a 38 millimeter below the perineum. It locates the distal border of the thigh band level. Next is the pelvic band. Mark both the anterior superior iliac spine, that is the pelvis bone, you can say, otherwise a pelvic bone, both the anterior superior iliac spine, which will be the reference point for the pelvic band. After this parts and the bony landmarks, now we will come to the classification of the orthosis. Previously we have seen the specification of the orthosis. Now it is a classification, what sort of work the orthosis is going to do. Specification means up to which level the orthosis is going to cover the limb. Classification means what sort of work the orthosis is going to do. If you see this, the orthoses are classified into 4 major groups. One is a supportive type orthosis, number 2 is functional type orthosis, number 3 is a corrective type orthosis, and number 4 is a weight relieving type orthosis. So based on the problem with the patient, we have to decide what sort of orthosis is patient is in need of. So accordingly we have to decide the type of the orthosis, and that type should be given to the patient. If you go again, what is the purpose of providing the orthosis? Because giving the orthosis is not a very easy one, but for what purpose we are giving, that has to be justified. Number 1 is to prevent and correct the deformity. The orthosis what we are giving to the patient should either prevent the deformity or it should correct the deformity. Preventing the deformity means there is expectation that the person may develop a deformity, so that deformity should be prevented. So that is called as prevention of deformity. The other one is called as correction of deformity. The person is already developed the deformity, but the deformity can be corrected. If you are not providing the proper orthosis, the deformity may improve, the deformity may develop more, and it will go into the worst condition. So correction should be made in time. That's why the orthosis, either it will prevent the deformity or it will correct the deformity. Number 2 is to relieve the pain. Relieve the pain by limiting the motions. If the person, for example, the person is having osteoarthritis problem, the person is having any problem in the knee joint, like osteoarthritis, most common deformity is disease in the knee joint. If the knee joint goes into flexion and extension, nowadays nobody uses to sit in the floor, because cross-leg sitting is very, very important for to maintain the knee joint movement. Nowadays we are not sitting in the cross-leg movement. We are sitting in the chair, we are sitting in the sofa, and we are lying on the bed. So very occasionally we used to take our food also in the dining table. So we are not using our knee joint completely. Complete movement where you will get, either you are sitting in the toilet, that is called as squatting. When you are sitting in the toilet, that knee joint is completely getting the entire range of movement. That means the full range of movement of the knee joint is achieved in squatting position. So sitting, and nowadays again the toileting is also goes into Western style. There again that is also not possible for the person who can sit, who can utilize the full amount of knee flexion. So that is the problem. So when the person is having any joint pain, so if up to some extent the person is having the pain, so after that, up to that limit, we have to restrict the movement, because after this movement the person is having pain means the knee joint, the orthosis what we are providing should stop the person knee joint
not going beyond that point where the pain is starts. So by reducing the pain or preventing the pain by limiting the motion. Now next, number 3 is to transfer some percentage of body weight to the orthosis. That means the person bears his entire weight on his own, then he may be having the pain because of the weakness in the ligaments, because of the weakness in the muscles, because of the weakness in the bone. So transferring some amount of the body weight to the orthosis, that means we are assisting the person, not bearing the entire weight, bear some amount of the weight, the remaining amount the orthosis will bear. Again, the next point is to immobilize the particular weak or injured segment. In case of injury, in case of fracture, we are providing the person with some different type of orthosis, that is called as fracture braces. In this condition, the person can't put his weight on his own limb. So again, the orthosis is doing immobilizing the particular part. So by immobilizing the particular part, the weight is transferred to the nearest next segment. Next is to improve the function of the affected limb. Once the limb is affected, our main aim is to improve the function of the affected limb, providing the orthosis in the form of providing the orthosis, because the orthosis is doing some work, it improves the person's affected limb. So these are the purpose why we are giving the orthosis. ऑर्थोसिस प्रोवाइड करने के लिए जो आपने बताई है फॉलोइंग पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए कि वी आर गिविंग द ऑर्थोटिक डिवाइस टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी, टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी की डिफॉर्मिटी नहीं हुई है अभी, उससे पहले ही हमने उसका रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर दिया है, या टू रिलीव फ्रॉम द पेन, या कोई किसी टाइप की वीकनेस है, इस तरह की जो भी परेशानियां उन सबको मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें डिजाइन करना चाहिए. Yes. So that is a purpose. Otherwise, the orthosis purpose will not be served to the patient. Next is orthotics prescription is having two major objectives. How to prescribe the orthosis? What basis the orthosis is prescribed? Number 1, to define the anatomical segments that the orthosis will encompass. That means before designing the orthosis, before deciding the orthosis, the orthotist should know that the orthosis what we are providing to the patient should encompass this much amount of the body part, because that means the orthosis will not interfere to the patient which is parts are normal. The orthosis will only interfere where the patient is having abnormality. So that is the main aspect. Number 2 is to describe accurately biomechanical controls that is needed for treatment. Biomechanical, I told you in the beginning also, the orthoses are working under force system. So that is called as biomechanical force system. So the orthosis should be given in such a condition that the force system applied to correct or to prevent the particular disease or deformity which is present in the patient. Next is the principle of assessment. How to assess the patient, because the underlying principle of this assessment is the orthosis should be designed to control only those movements that are considered abnormal. So wherever the abnormality is there, the orthosis should be designed for that purpose only. At the same time, permitting free motion in anatomical segments that are not impaired. Those parts which are not involved in any manner should not be disturbed. So that is the main aspect of the principle of assessment. Coming to the next is a force system. These orthoses are functioning under 3-point pressure principle system, either to correct the deformity or to maintain the normal anatomical structure of the weakened or deformed segment. If the deformity is already present in the limb, the 3-point pressure principle system will correct the deformity. If the deformity is not there, but there is a weakness or deformation in the body part or in the lower extremity, that the force system is used to maintain the normal anatomical structure of the weakened and deformed segment. What is the force system? This is called as the 3-point force principle system. Everybody knows about the Newton's third law. For every action there is an equal and opposite reaction. So in this, based on this force system only, these orthoses are functioning. How this is functioning, you can see in this. The diagram shows how the force system acts to correct the foot drop and pes valgus deformity.
So these are the various types of forces. So you can't see the force, how it is acting. Once the patient is using the orthosis, he can able to feel the force, how the orthosis is correcting his deformities. So these force systems should be properly designed. That means point of application, where the force should applied, and direction of the force, from which direction the force should be applied. This is the two main aspect. One is point of application, the other one is direction of force. If these force systems are designed and applied to the patient properly, accurately, the deformities can be corrected to the maximum extent. टेक्निकली अगर हम देखें तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फोर्स सिस्टम का कैसे हमें प्रॉपरली मतलब वैसे डिजाइन करें कि करेक्टली फोर्स सिस्टम हमारा अप्लाई हो सके। और जैसे कि आपने पहले बताया कि जो हम असेसमेंट करते हैं उसमें असेसमेंट इस तरीके से किया जाए कि जो अफेक्टेड पार्ट है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे डिजाइन करें कि जो नॉन अफेक्टेड हमारा एनाटॉमिकल पार्ट है उसको कोई इंटरफेरेंस ना हो उसके फंक्शंस में। Yeah, that is the main thing, because only the affected part of the limb should be considered for the fitment of the orthosis. The non-affected part should not be disturbed, because once it is non-affected, if you are interfering on the non-affected area, that means you are going to interfere with the joint movements, you are going to interfere with the patient's ability for his movements, his functional activities are getting disturbed. So you should not interfere with the patient's normal limb functioning movements. The orthosis should be designed only for the affected areas based on the corrective force system. जी सर, जैसे मतलब हम टेक्निकल टर्म में बात करते हैं तो फोर्स सिस्टम जैसे हम अगर विदाउट ऑर्थोटिक डिवाइस अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो वॉकिंग पैटर्न होता है उसमें फोर्स सिस्टम कैसे अप्लाई होता है? See, in normal walking, that is normal human locomotion, then in normal human locomotion, there is no external force system is applied to the patient, applied to the normal man, because only there is a force, that is the body weight is applied on the lower extremity and the ground reaction force is applied to the body. So there is no external, third force is not there. These two forces are equalized at the ground level only, because ground reaction force is resisting your body weight and the velocity. Once you are running, your force will be different. Once you are walking, your force will be different. When you are standing, your force will be different. Once you are running means the force will increase. When you are walking, your force will little bit decrease than the running. Once you are standing, it will further decreased. So these are the various types of force system acting. But the ground reaction force will equalize whatever the function what you are doing. Once you want to run, you are putting more force on your body. Once velocity increases, you are putting more force on your body. So the ground still resists that. Once you are walking, the load is little bit lesser than in running. Again, the ground is resisting that. So, for example, I can tell you, if the ground reaction force is not matching with your load, what you are applying on your lower extremity, you can't able to walk. For example, the person who can run in the normal ground surface very fast, if you tell the person to run in the sand area, he can't able to run very fast, because the sand is not having a ground reaction force, because it's a loose soil. Once it is a loose, once the person puts his limb on the sand scatters. That means your load is splitting into the various directions. Once you are splitting into the various directions, you can't make balance on the sand. That's why if it is sand area, if it is a foam, if there is a very huge amount of foam is there, you can't able to stand on that, because your center of gravity will shift, your ground reaction force is not getting. That's why you can't able to walk in the sand, you can't able to run in the sand for a longer time. So that is the main biomechanical reason why the ground reaction force and the load acting on the body. Whereas in the orthosis, there is a third force is acting. Ground reaction force is also there, patient weight is also there. At the same time, there is an external force which is also given to the patient in the form of the orthosis. So that external force is not applied to the normal human locomotion. इसका मतलब जो फोर्स सिस्टम है वो हमारा नॉर्मल नहीं, जैसे अगर हम डिजाइन करते हैं जो जिनको ऑर्थोटिक डिवाइस की जरूरत होती है
और जो भी उनकी कंडीशंस प्रेजेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसका ध्यान में रखा जाता है. Yeah, depends upon the deformity. The point, that's why I told you what is the point of application. At which point the force should be given, from which direction the force should be given. These 2 points should be considered. Then only the deformity can be corrected very easily. This is again another example of correcting force system which is applied in the KAFO, knee ankle foot orthosis. What are the you can see 2 forces from posterior, that is from behind to the anterior, and 1 force is applied from anterior to the posterior. So there is 1 corrective force from anterior, and remaining 2 forces are the counter force which is resisting the limb from the posteriorly. So again it is again the one of the example for 3-point pressure principle system. Next is principles of orthotic fit and alignment. How the designed orthosis, what we have designed the orthosis, how it is fitting with the patient and how it is aligned to match with the patient anatomical structure. That is also one of the main important aspect. An orthosis used in the rehabilitation can be prescribed for variety of reasons like neuromuscular and musculoskeletal disorders. For example, the patients with rheumatoid arthritis or an acute injury, an orthosis can be used to rest the inflamed joint and its surrounding tissues. It is also prescribed in post-operative cases to immobilize the affected body part. Orthosis can also serve as a stabilizing substitute for muscles that are weakened by disease, example poliomyelitis. Before coming to the conclusion of the design of the orthosis, whether the particular orthosis would be appropriate for the patient with gait dysfunction. Gait dysfunction means what we are having is a normal human locomotion. What the patient is having is not a normal human locomotion. Still it is a gait, but it is not a normal gait. It is called as abnormal gait. So the designed orthosis should match with the patient's gait dysfunction. What sort of gait dysfunction the patient is having, that should be rectified with the help of the orthosis. So gait dysfunction or other functional limitations, rehabilitation professionals must understand 2 things. What are they? Number 1 is the basic biomechanical principles of joint and motion. Because once if you don't understand the plane of joint, in which plane the joint is moving, what is the amount of the joint movement, what is the purpose of the joint movement, why this movement is taking place for this particular human locomotion. If you can't understand all these aspects, it's very difficult to the professional to design the orthosis. So basic concept is to biomechanical principles of joint motion is also one of the very important, and the proposed design of the orthosis and its impact on the joint. What sort of orthosis I am prescribing to my patient, and the orthosis will, what sort of impact the orthosis will provide on the patient. These 2 things are very much important before considering the aspects. Principles of again orthotic fit and alignment. The fabrication and alignment of an orthosis is not only based on the condition of the disabled limb, but functionally, structurally, a deficient limb must be considered in all aspects for the fabrication of appliances. Because once the limb is affected, we can't say that the limb is completely waste. There is nothing in it. Only the orthosis will do everything. No, the limb still have some functions. Maybe it is not having the complete function, but the limb still have some amount of function. That some amount of function should be considered. That some amount of function should be considered for what purpose that amount of function can be utilized. If the patient can able to walk with pain, your orthosis can reduce the pain, then the patient can able to walk without pain. So that ability what the patient is having joint movement, but the patient is having pain. So by relieving the joint pain, the patient can able to walk without pain. So that availability of the function within the patient should be considered before going for any fit and alignment of the orthosis. Special attention must be given to the static and dynamic relationships of hip, knee, ankle and subtalar joints. Special attention in the sense, what are the, again I told what I said in the previously, what are the movements available, what are the functions available with the patients
joints. That should be considered. If these relationships are not considered properly and the alignment procedures are not taken into considerations while designing the orthosis will not perform the satisfaction of the user and could increase any other complication. If we are not considering these aspects properly at the designing of the once you are making error in assessing the patient, aligning the orthosis, fitting the orthosis, if you are making an error, that error will result into the patient's performance. If the design is having error, user is going to suffer. So if you have to take accurate information of everything, then only the orthosis will do the successful use of the user. बेसिकली मतलब जैसे आपने पहले बताया था, इसका मतलब coinciding the mechanical joint with the anatomical joint, keeping in mind the comfortness of the patient individual, और वो इस तरह का वेल डिजाइंड होना चाहिए कि सारे जो फैक्टर्स जो अभी तक हमने देखे कि डिफॉर्मिटी का है, पेन का है, क्या कंडीशन है, बेस ऑफ सपोर्ट कितना होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्टिंग कैसा होना चाहिए प्रॉपर ताकि बैलेंस आ सके, प्रॉपर वेट बियरिंग कैसी होनी चाहिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए. Yes. Again, objectives of the proper fit and alignment. What is the main objective? Why these fit and alignment are more important? The heel and sole of the shoe should be properly contact with the ground. If we are walking, normally once we are walking, our heel and sole of the shoe will have a proper contact with the ground. If it is not having proper contact, nobody can walk properly. So, second thing is the anatomical mechanical joints coincide to each other. This I told in the earlier session also. Both the joints, anatomical joints of the patient and the mechanical joints of the orthosis should coincide to each other. Second thing is horizontal orientation of the mechanical joint axis, because the anatomical joints are inbuilt. We can't see from the outside how it is functioning. It is inbuilt, whereas the mechanical joints are externally fitted. For orthosis, there are two knee joints will be there, one in the medial aspect, one in the lateral aspect. These two joints should coincide with the patient's anatomical joint. At the same time, these two joints should coincide with each other also. The height of the joint, that is called as horizontal orientation of the joint axis. Proper anatomical landmarks and contours, because if you just imagine your limb, the shape of the limb from the foot to the thigh level is having a lot of contours and shapes. So these contours and shapes should be considered while designing the orthosis. Otherwise, the orthosis either will go into very bulky one, or the orthosis will go into very narrow one. If it is in a geometrical type, the orthosis is made of a geometrical type, straight bars and having sharp curves, that means the person can't use it. The orthosis should be made in such a way, if the shape of the limb is like this, the orthosis should also coincide along with the contour of the limb. Then only the person can able to use the orthosis without any difficulties. There should be at least 6 mm clearance between the patient skin and the orthosis, because skin, you know very well, skin is a very soft part of the body, and orthosis is made of a metal or plastic, which is a very durable metal, and plastic is also a durable material, but since it is having a smooth surface, but the metal must be having a very hard surface. So these two skin and the metal should not come into contact with each other when the person using the orthosis. So once it is coming to contact with each other, there may be a chance of rubbing of skin with the orthosis, which may leads to skin irritations, sometimes which may lead to scars also. So there should be at least 6 mm clearance between the patient's limb and the orthosis. And if you ask for what is the perfect orthosis, we can say what is the ideal orthosis, like ideal man, ideal woman, ideal thing, everything is ideal. So in this, orthosis also ideal. What is ideal orthosis? Although no orthosis will restore the normal function of the body part in the presence of the neuromuscular and musculoskeletal disorders. This is true, because we cannot bring back the patient to the normal life. We can able to bring back the patient to the near normal life. We can't assure that you will be completely normal.
because there is a problem, neuromuscular and musculoskeletal problem. That problems cannot be overcome. But effective and well-designed orthosis definitely enhances the mobility, which further improves the quality of daily livings. So, what are the things what I have said in the earlier sessions? All the things should be considered, all the factors should be considered for designing the orthosis. That is called a well-designed and well-effective orthosis can bring back the patient to his near normal life by enhancing his mobility. Before fitting the orthosis, the patient may be within the house itself. He can't able to move outside the house. After fitting the orthosis, now the patient can able to move somewhere outside the home. He can able to move very shorter distance to purchase something from the market. So that means his functional ability is increased. This can be increased only if you consider all the factors perfectly, then only this can be achieved. बेसिकली जो हमने अभी तक के सेशन में डिस्कस किया, मतलब उसको नट शेल में अगर हम कंसाइज करके बोले तो जैसे आपने बताया कि आइडियल ऑर्थोसिस के बारे में कि सारे फैक्टर्स और क्राइटेरियंस को हम ध्यान में रखते हुए उसको जिस हिसाब से डिजाइन करें टू इम्प्रूव द फंक्शनल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. Yeah, functional ability. And again, in that ideal orthosis also, this is also one of the main factor. From the patient's point of view, there are two important determinants of success, because we are making the orthosis on our professional skill. What is, how to be designed, what is the design should be, what material should be selected, how the joints should be aligned, everything we are deciding on our own to suit the patient's deformity. But from the patient's point of view also we have to think how the patient will use the orthosis, how the patient will like the orthosis. So these things is number one is whether the orthosis is comfortable during use. Because once the patient is using the orthosis, in the beginning I said the orthosis should be very simple enough to wear the orthosis, that is removing the orthosis and wearing the orthosis should be very easy. Then only anybody likes it. Whether the orthosis is comfortable during use and how well it meets in needs and goals. What is his need? He wants to move in and around. So whether the orthosis is doing that work? Yes, it is doing that work. What is his goal? He wants to go back to his duties. Whether the orthosis is doing that work? Yes. After using the orthosis, the patient can going to his normal work. Maybe nowadays he may not be able to go by the public transport, but at least he is reaching the office by his own transport or by private transport. So goal is that the person can go back to his normal duties. The deformity is still there, problem is still there, but the problems are minimized. Deformity is overpowered. Now the deformity will not be there. It is governed by the orthosis. So the person again can able to go to his normal duty. Like he is working means he can go to the office. If he is studying, he can go to the college. So these things can be achieved. So that is the needs and goals. Next is, does the orthosis enable the patient to accomplish the task and be involved in activities? If suppose the neighbor is calling, if the person is sitting in, disabled person is sitting inside, he can't be able to go and open the door. After fitting the orthosis, now he can able to move within the house itself. So now he can able to go and open the door to talk to the neighbors. So that is the main thing. The patient is enabled to accomplish the tasks. So he can able to have a communication with the neighbors. Socially he can able to have a link with the neighbors. So this will improve his moral ability, psychological booster to the patient that I can do what the normal people can do all doing. And he can also involve in activities that are important to him without undue discomfort. He can able to climb stairs sometimes. He can able to come down. He can able to go to the market. He can do his work on his own. He can perform his activities, most of his activities on his own. So this is the patient's point of view. Patient needs the orthosis should be comfort, and the orthosis should help him to perform all his activities what he can't able to do without the orthosis. सर जैसे यहाँ पे हम बात करें एक्टिविटीज की जो मतलब उसके लिए ज़रूरी है या जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करना चाहता है वो इजीली कर सके. जैसे अगर मान लीजिए हमने पेशेंट को दिया है हिप, नी, एंकल, HKFO, तो उसमें जैसे अगर मान लीजिए उसको स्टेयर क्लाइंबिंग करनी है, उसका नी फ्लेक्शन चाहिए, तो उसमें क्या ऐसा प्रोवाइडेड होता है कि नी फ्लेक्शन में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उस ऑर्थोसिस में?
In this condition, there are some gait training systems are available to the patient. What we are giving to the patient, how to climb the stairs. If the person is using orthosis in one side, any either left limb or right limb, he can able to climb the stair and he can descend the stair also. So for which he needs a special training program, that is called as a stair climbing and stair descending program is there, that he has to learn. Once he is not learning that, it is difficult for him. So that's why I'm telling how the orthosis is playing an important role in rehabilitation is, so the person who is using the orthosis can climb the stairs by taking the proper training. So that is again it is a rehabilitation, because maybe the person may be staying in the first floor using the orthosis. After fitting the orthosis, if you are telling that you can't go to the first floor to your house, no more, you will have to stay in the ground floor. Is it not possible? The patient has to go to his home again. How he will go back? So if he has to climb the stairs, we will provide him a training how to climb the stairs. While climbing, how to make a sequence of your legs. While coming down, how to make the sequence of your legs. So these things will be trained to the patient before leaving the department. That is also one of the main aspect of the rehabilitation. तो बेसिकली रिहैबिलिटेशन जिसका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एड्स एंड अप्लायंसेस का देखें तो उसमें हमें मतलब हर डिवाइस देना बस यही काम नहीं है, उसके साथ साथ हमें उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए. ट्रेनिंग में ये बताया जाता है पेशेंट को कि उसको कैसे यूज करना है, किस तरीके से जो एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी को उसको कैसे परफॉर्म करना है. Yeah, if you recall the beginning slides I had shown you, what's the responsibility of the orthotist? The responsibility of the orthotist is to guide the patient how to use the orthosis. Using the orthosis is also one of the main factor. If suppose fitting the orthosis, okay, the orthosis is good, make a walk, he is walking on the plain surface, he is walking very good, okay, now he can go. Yes, he can go, but how he will come down to the, if you can see the ramp is also available, how he come down to in the ramp, how he will climb the staircase. So these trainings, so when the patient is coming to us, we used to take all the relevant data, where he is staying, whether he is staying in the urban area, whether he is staying in the rural area, whether the patient is staying in the ground floor or he is staying in the multi-story building, lift facilities available or not. So after considering all these factors, accordingly what are the training programs patient is in requirement. So we used to provide all the training program to the patient, then only we will deliver the appliances to the patient. Otherwise the use of the appliances is nil. When he reaches his flat, he has to remove the orthosis, then he has to go for any other mode to reach his house, then again he will use the orthosis. If in the per day, if he wants to come down 3 times, nobody will help him to remove the orthosis, coming down again wearing the orthosis, not possible. So this will be trained to the patient. You can climb the stairs, but the thing is that he can't able to climb in a normal manner, but he can able to climb in some specialized manner. That specialized manner we will explain the patient. सर जैसे अभी तक जो आपने सेशन में बताया, जो हमारा बेसिकली जो आज का जो सेशन फोकस था वो था रोल ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसके 2 पार्ट्स थे, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स. आज का जो हमारा सेशन था वो बेसिकली कंसंट्रेट करता है ऑर्थोटिक्स पे. और ऑर्थोटिक्स में जो हमने देखा अभी तक हमारे एक्सपर्ट्स ने उसके ऊपर बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दी. हमने जो अपना सेशन स्टार्ट किया था वो बेसिकली था कि जो हमारा टर्म है रिहैबिलिटेशन, उसका मतलब क्या होता है, विच इज़ एन रिहैबिलिटेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है, मैक्सिमल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए उसको हम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं और उसकी हम स्ट्रेंथ्स को यूज़ करते हैं और एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ जा सके. वो हर इंडिविजुअल का अपना अपना अलग अलग लेवल होता है, हर लेवल के अकॉर्डिंग वो काम करता है. इंडिविजुअल्स की अलग एबिलिटीज़ होती हैं, अलग स्ट्रेंथ्स होती है, लिमिटेशंस होती हैं. फिर हमने देखा कि ये जो ऑर्थोटिक्स होते हैं बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, विच इज़ एन साइंटिफिक एक्सटर्नल डिवाइस जो हम देते हैं पेशेंट को, जो उनके नीड्स पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डिफॉर्मिटी हो चुकी है या अभी नहीं हुई है, इनिशियल स्टेज में है या फाइनल स्टेज में है, मिडिल स्टेज में है, पेन हो रहा है, कितना लेवल है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, उसका लेवल क्या है और पेशेंट की क्या नीड्स हैं
और उसको किस तरीके का डिजाइनिंग चाहिए, जैसे मेटालिक दिखाया, प्लास्टिक दिखाया। हर किसी के एडवांटेजेस अलग होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर वो कॉस्मेटिक अपीयरेंस में अच्छा है तो शायद वो जो वेदर चेंजेस हैं उनको उसको एकोमोडेट ना कर पाए, उसमें अच्छे से एडजस्टेबिलिटी ना प्रोवाइड कर पाए। तो हर किसी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो हम उस पेशेंट्स के उसकी नीड्स के आधार पे और जो भी हमारे प्रोफेशनल्स रिकमेंड करते हैं उसके आधार पे हमें ऑर्थोटिक डिवाइस हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जो हमने सारे फैक्टर्स देखे, जैसे जो था करेक्ट द डिफॉर्मिटी, प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी, पेन है, मसल वीकनेस है कितना है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग में कि अगर जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग का जो हमने एग्जांपल लिया था उसको किस तरह की देनी है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है तो हमें जो उसको ट्रेनिंग देनी है इस तरीके से देनी है कि वो अपना खुद जा सके, उसको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिहैबिलिटेशन। Yes. सर जैसे ये जो हमने डिस्कशन किया इसमें आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, जैसे ऑफनली जो मिस्टेक्स पेरेंट्स करते हैं या जिनको हम डिवाइस प्रोवाइड करते हैं वो इनमें कैसे मिस्टेक्स कर सकते हैं? नहीं, ज़्यादा करके जो हमारे पास पेशेंट आते हैं मोस्टली बच्चे होते हैं जिनके पोलियो के कैलिपर वगैरह जो पहनते हैं, और वो पहनने के बाद में बच्चे बड़ी जिद करते हैं कि मैं ये नहीं पहनूंगा, कुछ अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बच्चे के बोलने से ही मालूम पड़ता है वो। और जब वो नहीं पहन पाता तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती होगी। पर एक तो बच्चे होने के कारण वो अपने आप को बड़ा फ्री महसूस करना चाहते हैं कि मैं फ्री रहूं, मुझे बांधा नहीं जाए। पर अगर वो नहीं करते हैं और माँ बाप भी अगर उनका साथ दे देते हैं कि भाई मैं ये नहीं पहन रहा, कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है, वो नहीं पहनाया। पर देखो दवा जो है वो कड़वी होती ही है। अप्लायंसेस भी एक तरफ से अगर हम दवा की तरह इसको यूज़ करें तो शायद बच्चे के आने वाले टाइम पे उसके कॉन्ट्रैक्चर वगैरह डेवलप नहीं होंगे। कैलिपर पहनने के बाद में अगर बच्चा छोटा है तो माँ बाप को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पहन के जाना है, पहनना है, कौन से इसके पार्ट में वीकनेस है और उसको कब फिजियोथेरेपी करवानी है, कब फिजियोथेरेपी पहनाना है, कैसे पहनाना है। अगर बाहर गया अगर उसमें कुछ तोड़फोड़ हो गई है तो उसको रिपेयर कहाँ करवाना है। जूता अगर मान लो घस गया है तो उसको किस तरीके से उसको रिपेयर करवाना है। ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यानी रख रखाव भी इन ऑर्थोसिस का बिल्कुल शरीर के अंग के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर रख रखाव सही नहीं होगा तो जल्दी वेयर टेयर होगी। बच्चे की जब हाइट बढ़ जाती है तो हाइट बढ़ने का भी हम लोग उसमें एक प्रोविज़न रखते हैं कि बच्चे की जैसे जब हाइट बढ़ती है हम लोग उसके स्क्रू को ऊपर करके उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कम से कम एक अप्लायंसेस देने के बाद में हमारे पास कम से कम 1.5-2 साल तक उसको आना नहीं पड़े, उतनी गुंजाइश उसमें होती रही है। फिर भी अगर वो बड़ा होता है हमारे पास आके अगर करवाते तो हम उसकी बार को चेंज करके इंजीनियरिंग तरीके से उसको चेंज करके उसको चेंज कर सकते हैं। बच्चों के जितने भी अप्लायंसेस हैं ज़्यादा करके काफ़ी हल्के होने चाहिए, उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। कंफर्टेबल हो उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं, प्रॉपरली पहने। और उसको सीखने के लिए हमारे पास जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, मल्टीपर्पज़ रिहेबिलिटेशन वर्कर हैं, या गांव में और भी थेरेपिस्ट लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर लोग भी ट्रेनिंग देते हैं। उस तरीके से अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से चलना और उसको यूज़ करना सिखाएं तो हम लोग बच्चे को बहुत कुछ अच्छा रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। तो उसके रख रखाव की और उसकी देखभाल की, उसकी केयर मेंटेनेंस की, उसकी प्रॉपर फॉलोअप की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जहाँ भी अगर कोई बच्चा इस तरीके से आता है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल जानी चाहिए कि उसको कहाँ किस तरीके से कब और कैसे जाना है। फॉलोअप भी बड़ा ज़रूरी होता है, हाइट की एडजस्टमेंट भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा उसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएगा। प्रॉपरली यूज़ करेगा तो बाद में फिर कॉन्ट्रैक्चर भी नहीं होंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा और कम से कम अपना रोज़मर्रा का कार्यक्रम आराम से कर पाएगा। मतलब जो बेसिकली हमने जो डिस्कस किया, जो मेन पार्ट है रिहैबिलिटेशन का, जो हमने इनिशियली जो आपने एक्सप्लेन किया था, रिहैबिलिटेशन का मतलब ही यही है कि मैक्सिमल कैपेसिटी में जो इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाना। और फाइनली जो हमने देखा अभी तक के सेशन में उसमें ये था कि हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए कि अपना जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं वो इंडिपेंडेंटली कर सके। अभी जैसे आज हमने ऑर्थोसिस के बारे में जितना भी जानकारी ली, अब इसमें एक चीज़ की और ज़रूरत होती है कि कई बार जैसे दोनों पैर में अगर कैलिपर पहना हुआ है या ऑर्थोसिस पहनी हुई है तो उसको चलने के लिए और सपोर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं बैसाखी या कोई सपोर्टिव इक्विपमेंट है, वॉकर है या एल्बो क्रचेस है, डिफरेंट टाइप के मोबिलिटी एड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार दोनों पैर में कैलिपर हो, आदमी सीवियरली उसको पहनने के बाद चल नहीं पाता, तो उसको चलने के लिए हम लोग
चाहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद में वो व्हीलचेयर का भी उपयोग करे, अपनी ऑक्सीजन कंजम्पशन कम से कम खर्च करे, जो ऑक्सीजन उसके पास है या उसकी शक्ति जितनी है उतना ही उसको यूज़ कर सके। हम ये नहीं सोचते कि एक बार कैलिपर पहनने के बाद में उसने मीलों चल लेना है, ये पॉसिबल नहीं होता। फिर भी जहाँ तक हो सकता है वो डिस्टेंस को अपने आप कवर करे, अपना रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम खुद बनाए, कहाँ पर इसको कैलिपर पे चलना है, कहाँ उसको बैसाखी का सहारा लेना है, कहाँ पर इसने व्हीलचेयर के जरिए डिस्टेंस को तय करना है। तो ये सब चीज़ें जानना एक थेरेपिस्ट से, एक ऑर्थोटिस्ट से, एक डॉक्टर से राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो सर, प्रॉपर जैसे- रिहेबिलिटेशन तभी होगा। जी, जैसे अभी हमने असेसमेंट की भी बात करी थी अपने डिस्कशन में, तो असेसमेंट में हमने देखा था कि डिफॉर्मिटी को हम मतलब अगर होने वाली है या कैसे, जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है हम देख सकते हैं। और अभी डॉक्टर शरद अंगा ने बताया कॉन्ट्रैक्चर्स के बारे में। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो कॉन्ट्रैक्चर जैसे बताया कि घुटना है, घुटने को अगर हम ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं और घुटना निगलेक्टेड रह जाता है, उसकी कोई वर्जिश नहीं होती, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता, एक ही डायरेक्शन में वो रह के फिक्स हो जाता है। जब फिक्स हो जाता है तो घुटने का मूवमेंट खत्म हो गया, घुटने का मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद में कड़क पड़ जाता है। जब कड़क पड़ जाएगा तो उसको या तो उसको हम सर्जिकल इंटरवेंशन से या करेक्टिव सर्जरी करके उसको घुटने को सीधा करके फिर ऑर्थोसिस पहनाते हैं। ज़्यादा करके हमने देखा है, जो मोस्टली हम लोग जब कैंप वगैरह लगाते हैं तो कैंपों में मोस्टली हमें पोलियो के और इस तरीके के निगलेक्टेड केसेस बहुत मिलते हैं। निगलेक्टेड केसेस वो मिलते हैं जिनको ऑर्थोसिस टाइमली नहीं मिला हो। जब ऑर्थोसिस टाइमली नहीं मिले और कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो चुका है तो हमारे लिए ऑर्थोसिस फिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ऐसे केस में उनको रेफर करते हैं कि इनका सर्जिकल इंटरवेंशन होके कम से कम उसका घुटने का या हिप का या एंकल का जहाँ भी कॉन्ट्रैक्चर है वो रिलीव हो जाए। उस रिलीफ के लिए हम लोग उनको भेजते हैं और रिलीफ होने के बाद में उसको फिर ऑर्थोसिस का फिटमेंट करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। अगर हम पहले से उसको सही ढंग पे लेके चलें तो शायद सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर गांव में हमने अक्सर देखा है कि हमारे अगर हमने 100 मरीज पोलियो के देखे हैं तो उसमें से करीबन 20 या 25 मरीज ऐसे होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्चर होने के कारण हम लोग ऑर्थोसिस फिट नहीं कर सकते। और कई मरीज तो ऐसे होते हैं जिनके दोनों पैर में पोलियो है और दोनों पैर में इतने कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं कि उनके कम से कम 8 या 9 ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। एंकल का अलग करना पड़ेगा, दोनों पैर के अलग अलग ऑपरेशन होंगे, उसके बाद में नी के ऊपर ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर हिप में करना पड़ेगा और कम से कम उसको हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक रहना पड़ेगा। और ऐसे मरीजों को इमीडिएटली रिहेबिलिटेशन हम लोग कर नहीं सकते जब तक उसका सर्जिकल इंटरवेंशन होकर कॉन्ट्रैक्चर का रिलीफ नहीं हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम लोग एकदम क्विक उनको रिहेबिलिटेशन करने के लिए तो हम लोग ये कहते हैं उसको ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर ऐसी कोई अप्लायंसेस हम दे देते हैं जिसके ऊपर बैठ के, क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी तो सही है, लोअर एक्सट्रीमिटी में ही गड़बड़ है। तो लोअर एक्सट्रीमिटी को वो अपने साइकिल पे बैठ के साइकिल को हाथ पे चला के और एक डिस्टेंस कवर करके अपना रोजमर्रा का कार्य कर सकता है। पर ये बड़ी मतलब अच्छी बात नहीं होती कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो। आदमी जहाँ तक हो सकता है अपने पाँव पे चले और कॉन्ट्रैक्चर अवॉइड रहे और ये सुविधाएं सब जगह मिले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर, जैसे आप इसी फील्ड में हैं, आपने बहुत सारे अभी तक पेशेंट्स देखे होंगे, कुछ ऐसा भी है कि कोई एक्सेप्शनल केसेस आप बताना चाहेंगे या कुछ शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बीमारी में तो देखिए कोई भी एक्सेप्शनल केस तो सारे ही अलग अलग ही होते हैं। ये तो हम कह नहीं सकते कि एक ही टाइप के हमें काफ़ी पेशेंट मिल जाते हैं। जैसे कि पांडियन साहब ने अभी बताया कि आपको हर केस के लिए अलग अलग मेजरमेंट लेना पड़ता है, अलग अलग तरीके से उनका असेसमेंट करना पड़ता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि असेसमेंट के बाद ही हम बता पाएंगे कि मरीज में क्या प्रॉब्लम्स है और इसको हम क्या दे सकते हैं, इसको हम कहाँ रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पर इसको सही ढंग की एडवाइस और सलाह मिल सके, और तभी हम उसका प्रॉपर तरीके से पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। आउटरीच प्रोग्राम में ज़्यादा करके हमें कई टिपिकल केसेस मिलते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जिनके सभी पूरे पैर में ही कॉन्ट्रैक्चर हो रखी है और जब हमारे पास आता है तो वो चारों पैरों पे, दोनों हाथ और दोनों पैर पे जिस तरीके से आपके पशु लोग चलते हैं उस तरीके से वो चल के आते हैं, तो वो उस तरीके की पोजीशन नहीं हो, चारों पैर को लगा के नहीं चलें या ऐसे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने पे वो अपना मूवमेंट तो करेगा ही करेगा, पर मूवमेंट इस तरीके से नहीं करें जिसमें वो एक तरह से अपने मानव का वो अपनी इमेज खो दे वो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कम से कम प्रॉपरली असेसमेंट प्रॉपर तरीके से अगर हो जाए तो ये नौबत नहीं आती और प्रॉपर अप्लायंसेस का
पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर अप्लायंसेस नहीं पहने तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि धीरे धीरे उनकी स्पाइनल कॉलम पे भी फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और रीढ़ की हड्डी भी उनकी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों के बारे में भी हम डिस्कशन कभी करेंगे, कि आज का जो हमारा टॉपिक है खाली ऑर्थोसिस से ही हमने सीमित रखा था, और ये हमारा टॉपिक जो भी हमारे प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक के प्रोग्राम्स जो कर रहे हैं, यानी कि डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम जो कि 2.5 ईयर्स का प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, ये सभी प्रोग्राम हमारे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रिकग्नाइज्ड हैं और डिफरेंट सेंटर्स में इंडिया में कई जगह चल रहे हैं। तो जो भी ये प्रोग्राम अटेंड करते हैं उनको ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और अधिक जानकारी और भी हमसे चाहते हैं तो आप लोग RCI में ही अपना फैक्ट्स देके कोई भी क्वेश्चन हमें पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और ये काफ़ी उनको फ़ायदा होगा कि प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक में रिहैबिलिटेशन किस तरीके से होता है और एड्स एंड अप्लायंसेस का हमारे में क्या रोल है जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है उनके लिए। और अगले टॉपिक में हम लोग ऑर्थोटिक के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, जिसमें ये होगा कि बैसाखी और डिफरेंट टाइप के जो मोबिलिटी एड्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं, कैसे उनका यूज़ होता है, किस तरीके से उनका मेजरमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें की जानकारी ऑर्थोटिक के ही टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टाइम देंगे। सर, जैसे कि आज के डिस्कशन में हमने देखा और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस दी हमें ऑर्थोसिस के बारे में, जो आज का हमारा चर्चा का विषय था, और जिसमें हमने देखा था कि रोल ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हम उसमें किस तरीके से हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थोटिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हमें डिवाइसेस प्रोवाइड करनी चाहिए, एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट्स की नीड को ध्यान में रखते हुए, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रिहैबिलिटेट करना। बेसिकली जो हमारा जो पूरा जो डिस्कशन था उसका मेन मकसद ही यही था कि रिहैबिलिटेशन करना। रिहैबिलिटेशन मतलब इंडिपेंडेंट करना विद इन द मैक्सिमल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ताकि वो अपना काम खुद कर सके, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। अगर कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी करनी है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो वो इंडिपेंडेंट रहे, उसको हर तरह की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। जैसे, और हमने अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया था इसी चीज़ से, रिहैबिलिटेशन के बारे में। रिहैबिलिटेशन का हमने एक डेफिनेशन देखी जिसमें यही सब बताया गया था कि इंडिपेंडेंट हमें बनाना है। उसके बाद हमने देखा है 3 टर्म्स होती हैं, डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप, जिसमें विद इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए हम कंसीडर करते हैं, वो दूसरा जो डिसेबल्ड पर्सन है वो नहीं परफॉर्म कर पाता है, और अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो हैंडीकैप में आ जाता है। और उसमें अगर ओवरऑल देखें कि अगर प्रॉपर मेडिकेशन एंड सर्जरी विच एवर इज रिक्वायर्ड, इट्स नॉट गिवन ऑन द प्रॉपर टाइम, अगर सही समय पर नहीं दी जाती तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानियां आगे बढ़ने की संभावना होती है। फिर हमने देखा कि ऑर्थोसिस, जो बेसिकली साइंटिफिक एक्सटर्नल डिवाइस, जिसका अभी तक हमारा पूरा जो सेशन था वो उसी के ऊपर था, उसमें ऑर्थोसिस कितने टाइप्स के होते हैं, फुट ऑर्थोसिस, एंकल ऑर्थोसिस, नी एंकल ऑर्थोसिस, हिप नी एंकल ऑर्थोसिस, ये 4 टाइप्स के होते हैं। जो एक इसी के फील्ड का जो प्रोफेशनल होता है, जैसे हर फील्ड में अपने प्रोफेशनल्स होते हैं, वैसे ही इसी फील्ड के जो प्रोफेशनल होते हैं, ऑर्थोटिस्ट जिनको हम कहते हैं, वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में सारी आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, कि हाँ पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के डिवाइसेस की ज़रूरत है। और जैसे हमने बीच में बात करी थी आर्च की, और उनके फंक्शंस भी हमारे एक्सपर्ट ने बताया था कि आर्च जो मेनली जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। प्रॉपर वेट बियरिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए फुट पे, अगर अनइक्वल वेट बियरिंग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे हाई हील्स, जो कॉमन नॉर्मल इंडिविजुअल्स, जो फीमेल्स हाई हील्स पहनती हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनका जो गेट पैटर्न होता है वो डेविएटेड हो जाएगा, और गेट पैटर्न डेविएटेड हो जाएगा तो डिफॉर्मिटीज डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। और इस तरह से हम जो बेसिकली हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी हम फिटिंग्स कर रहे हैं, उनका मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो एक प्रोफेशनल जानता है, और उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करना कि कितने मिलीमीटर्स पे करना है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है लिम्ब का, और जो भी हम डिवाइस बना रहे हैं उसको मेटालिक प्रोवाइड करना है या प्लास्टिक मटेरियल का प्रोवाइड करना है, कौन सा
किस हिसाब से हमें उसको प्रोवाइड करना है, कौन से बोनी लैंडमार्क्स में हमें उसको देना चाहिए, और जो सेंसिटिव एरिया है उनको ध्यान में रखना चाहिए, जो प्रेशर नहीं झेल सकते हैं उनका ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से मेजरमेंट क्राइटेरिया जो काफ़ी बातों पे फोकस करते हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। जो एक ऑर्थोटिस्ट प्रोफेशनल है वो इन सब बातों का ध्यान रखता है और उसी हिसाब से मेजरमेंट करके डिवाइस प्रोवाइड करता है और डिवाइस डिज़ाइन भी करता है। और ये डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस, जैसे पेस प्लानस हुआ था, पेस इक्वाइनस हुआ था, फ्लैट फुट जो आमतौर पे देखा जाता है, जैसे हमने देखा था जो छोटे बच्चों में जब वो चलना शुरू करते हैं तब उनका डेवलप होना शुरू होता है और मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स तक वो डेवलप होता है। फिर हमने धीरे धीरे अपने डिस्कशन में देखा कि जैसे जो डिफरेंट बैंड्स होते हैं, थाई बैंड है, काफ बैंड है, इन सब में हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें मेजरमेंट लेनी चाहिए, और बेसिकली जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑर्थोटिक डिवाइस बनाने के, उनमें हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इज इट देयर फॉर टू करेक्ट द डिफॉर्मिटी, टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी, या मसल वीकनेस है या पेन है, किसी भी तरह की परेशानी है जो पेशेंट कंप्लेन करता है प्रोफेशनल को, उसके आधार पे हम देखेंगे कि हमें किस तरह की डिजाइनिंग करनी है। और फाइनली जो आइडियल ऑर्थोसिस होता है, जो बेसिकली ये कहा जाता है कि हाँ इसी तरह का जो ऑर्थोसिस है वो डिज़ाइन करना चाहिए, जो कि किसी भी एक्टिविटी में इंटरफेयर ना करे और इजीली जो भी इंडिविजुअल है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी, स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखते हुए विद प्रॉपर ट्रेनिंग उसका यूज़ कर सके और सारी एक्टिविटीज़ कर सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्कशन में हमारे एक्सपर्ट्स ने दी थी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सो गुड इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स रिगार्डिंग द ऑर्थोसिस। तो ये हमारा आज का सेशन था ऑर्थोसिस के बारे में, जिसमें बेसिकली था रोल ऑफ ऑर्थोसिस इन रिहैबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। दिस इज टाइम फॉर द क्लोजिंग ऑफ आवर सेशन। थैंक यू सो मच।